Hello students, welcome to Power Tutorials. So let me just check whether audio everything is fine. Okay, so as promised, today we are going to cover section D questions, which is of 5 marks. So I'm sorry, so this is a prompt video, but still whoever is joining now or whoever watching this video later, if you have any doubts, you can anytime you can ping me in this chat. So before starting this video, I will just explain that first of all, welcome you all to my channel. So this channel is Power Tutorials. So in this channel, I am explaining about class 10 maths and science topics, questions, question bank series, practice question, sample paper, all this question type of things will be explained in this channel. So in this today's video, we're going to cover the section D, that is a 5 marks questions of maths class 10 exam paper, which is recently done, and I got the paper of 30/3/3 set. So I'm going to explain the solutions for that. I already completed section A, B, C sections in the live session in the previous yesterday, day before yesterday, and before day as well. So those 3 videos links I will just paste it in the live section chart as of now. So whoever is watching this video later also, you can go through those links and let me know if you have any doubts. Okay, so just give me a minute. I will just paste all those links in the live section chart. Just pasted for section A, same as I'll paste for section B and C. Paste for section B. Okay, one more. Yes, section C also have pasted in the live section chart window, so you can directly go through those links if you want to get the solution for section A, B and C. Okay, so I'll give a small recap of how I have explained those 3 sections. So I'll just give a glance, I'll not go in detail. So this is section A I have started. So in the section A I have started with MCQs, 18 MCQs. So each question not only with the exact answer key but also with the concept behind that question also I have explained. So these are total 18 MCQs. I have also mentioned the options as well. And then you have 2 assessment regions, and then this is a key for section A. So you can, if you want only the answer key, then you can directly take a screenshot of this and check your answers. And then I have started with section B, which is 2 marks questions. So here also same way, each and every detail along with the solution steps I have covered. Not only A or B, I have completed both. If the question is having A or B, I have explained both A and B, so that if either of one if you have solved, and also I have explained which to choose among these to get to answer faster. So that things also I have explained in detail. This is the answer key for section B. On the same way, I have completed section C, which is of 3 marks questions. I have tried my best to keep it more simple and so that everyone can understand each and every step. So till 29B and 31 is the last question. Yes. So and now this is answer key for section C. Okay, so I have also written the answer so that if you want only the answer key just to validate your answers, then you can directly check this answer key sheet instead of checking each and every slide. Okay, now let's move to the today's video, which is of section D, and I hope today so many might have written English exam. So I hope everyone
did well. And if you have any questions regarding English exam, and if you have written this English exam, I'll be really happy to listen your feedback, like how is the pattern and is it similar to maths, because most of the students have mentioned that the maths exam is bit tough and it is not direct, but CBSE board already have mentioned previously that it will not be direct questions from inside, it will be a little tricky, so it depends upon your preparation. Okay, so always make sure to practice questions more, so that whatever might be the questions they might be giving in your exam, you should be able to solve them. Okay, so just so section D, as we are starting now, it contains हिंदी में बोल दो. ओके, ठीक है, मैं हिंदी में बताने की कोशिश करता हूँ. मेरा हिंदी उतना 100% ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ. तो मैं मिक्स करता हूँ हिंदी और इंग्लिश, ताकि तुम लोग को भी समझ में आ जाए. ठीक है, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग देव भूमि. ओके, सो तो मैंने सेक्शन ए बी सी का सॉल्यूशन ऑलरेडी कर चुका हूँ. अगर आपको सेक्शन ए बी सी का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरा लाइव सेक्शन चेक कर सकते हो, उसमें वो सारे वीडियोस मेंशन कर चुका हूँ. ठीक है, तो अभी मैं सेक्शन डी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. तो लेट्स सी द फर्स्ट वन, विच इज़ 32A. सो द सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली. तो ये ग्राफिकल का क्वेश्चन है, तो हमको ग्राफ शीट, हाँ, एग्जाम सेंटर में शायद नहीं आपको देंगे, तो उस ग्राफ शीट में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो अभी हमारे पास ग्राफ शीट नहीं है, पर मैं एक्सप्लेन कैसे करता हूँ कि एक रफ शीट जैसा ग्राफ बना के उस तरफ से लाइन्स बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, तो अभी इस वाले क्वेश्चन के लिए हमको थ्री मेथड्स होते हैं. जैसे अलजेब्रिक हमको दो मेथड्स, वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड होते हैं, और एक वाला ग्राफिकली होता है. तो ग्राफिकल क्वेश्चन के लिए हमको पहले, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी दो पॉइंट्स है, ये ए वाला और दूसरा बी. तो हमको ए और बी किसी एक को सॉल्व करना है. और जैसे मैंने पिछले सेक्शन में बताया, जैसे इस सेक्शन में भी हमको पहले चूज़ करना है कि जो हमारा ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और ज़्यादा आसान लगे दोनों में. तो ये ग्राफिकल का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हमको ग्राफ शीट लिखना है, स्टेप्स पॉइंट्स लिखना है, उसके बाद लाइन्स लिखना है, उसके बाद पॉइंट्स आंसर निकालना है, वो भी कंफर्म करना है कि राइट और रॉन्ग. तो अगर मैं आपका जगह होगा तो ज़रूर बी चूज़ करता हूँ, क्योंकि ये टाइम थोड़ा लेस कंज्यूम करता है व्हेन कंपेयर टू ग्राफिकल क्वेश्चन. ओके, तो अभी मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ. फिर भी ऐसे क्वेश्चन अगर आप बेटरमेंट का, मतलब दूसरा एग्ज़ाम जो मई में होता है, उस वाले एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन चुनिए जिसमें आपका टाइम लेस कंज्यूम करे. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस. x minus 2y is equal to 3 and 3x minus 8y is equal to 7. So for this type of question what you have to do is, first हमको ऐसे ग्राफ, मतलब बॉक्स लिखना है जिसमें दो पॉइंट्स होना चाहिए, क्योंकि हमको मिनिमम टू मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए जिससे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो आई एम फाइंडिंग, I am solving table such that it has 2 points so of each equation, so that those 2 points I can plot it on the graph sheet and get the details. Okay, so first one, if you notice, for first equation, if I keep x as 0, I will get the y value as minus 3 by 2. So how I got minus 3 by 2, I will explain, which is x minus 2y is equal to 3. If I keep x as 0, so 0 minus 2y is equal to 3, so I will get y value as minus 3 by 2. Okay, same way if I keep y value as 0, then what I will get, if y is 0, then x becomes 3. I will explain here. x minus 2y is equal to 3. हमको y value 0 रखना है, तो y value 0 मतलब x minus 2 into 0 is equal to 3, तो हमको मिल गया x value 3. So the point is 3, 0. So have, तो हमको दो पॉइंट्स निकाल चुके हैं, जो 0, minus 3 by 2 फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकेंड पॉइंट हमको मिल गया है 3, 0, वो इक्वेशन 1 के लिए है. सेम वे लेट्स फाइंड आउट फॉर सेकेंड इक्वेशन. 3x minus 8y is equal to 7. 3x minus 8y is equal to 7. तो हमको इसमें 0, 0 सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, क्योंकि ये रेशनल है, तो हमको थोड़ा कैलकुलेट करके चूज़ करना है कि कौन सा वैल्यूज़ अच्छा लगे. तो इसलिए मैंने अभी क्या करता हूँ कि इधर
3 है और इधर 7 है और ये वाला वैल्यू 8 है। तो अगर मैं x वैल्यू सपोज 1, हाँ x वैल्यू 1 लेता हूँ तो क्या होगा 3 इंटू 1 माइनस 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 7. So 3 minus 8y is equal to 7. So 8y now becomes 7 minus 3 which is minus 4. So y value मुझे मिल गया 1/2. ओके, तो इस तरफ हमको पॉइंट्स एज्यूम करके वैल्यूज निकालना पड़ेगा जिससे हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और वो जो लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट होगा वो वैल्यू हमको सॉल्यूशन मिल जाएंगे. ठीक है, तो अभी ये 3x वाला हमको एक पॉइंट मिल गया जो x1 है और y 1/2. x1 और y 1/2. सेम वे अभी हमको दूसरा पॉइंट भी निकालना है. तो अभी मैं x2 अगर दिया हो तो 3 to 6 ओके 2 नहीं होगा, तो इसलिए मैं अभी क्या करता हूँ कि y वैल्यू 3 चाहिए 8 वैल्यू 1. ओके, y वैल्यू 1 लेता हूँ. अगर मैं y वैल्यू 1 ले लिया तो क्या होगा 3x माइनस 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 7. तो 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 7. तो अगर 8 राइट साइड ले गया तो 8 प्लस 7 होगा 15. सो x वैल्यू होगा 5. तो मुझे सेकंड पॉइंट भी मिल गया वो 5,1 और इधर फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट पॉइंट 1,1/2. तो अभी सेकंड लाइन के लिए मुझे आई गॉट 2 पॉइंट्स विच आर 1/2 एंड अदर वन इज 5,1. तो ये फर्स्ट स्टेप है और इस स्टेप के लिए हम आपको ज़रूर 2 मार्क्स शायद मिल जाएंगे अगर आपने अच्छे से ये दो पॉइंट्स दोनों इक्वेशंस के लिए मान लिया, मतलब ले लिए. ओके, तो अभी इस वाले पॉइंट्स को आपको ग्राफ शीट में पॉइंट करना है. तो अभी यहाँ मैं ग्राफ शीट नहीं ले सकता हूँ, तो अभी जैसे ग्राफ शीट होगा उस तरह से मैं ट्राई करता हूँ. ठीक है, तो ग्राफ शीट में हमको 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ये होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होगा नेगेटिव एक्स. दिस बिकम्स प्लस वाई, दिस बिकम्स माइनस वाई. ओके, तो अगर आप चेक कर लिया तो यहाँ x का वैल्यूज़ इंटीजर्स हैं, तो इसलिए मैं स्केल, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, शायद हाफ मार्क मिल जाएंगे आपको स्केल के लिए. तो स्केल में x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेता हूँ. तो इसलिए आपको ग्राफ शीट में शायद एक लाइन्स होंगे ना, बड़ा बड़ा लाइन्स. तो उस वाला लाइन्स में 1 2 3 4 5. सेम वे लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 लेता हूँ. और x y का वैल्यूस आपने चेक कर लिया तो y का वैल्यूस हमको रेशनल मिल गया, मतलब -3/2 0 1/2 1 जैसे मिला है. तो इसलिए मैं y एक्सिस का स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 यूनिट लेता हूँ. ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. जब भी आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो स्केल का मेजरमेंट भी शायद आपको हाफ टू 1 मार्क मिलेगा. तो हमेशा स्केल भी लिखना है. स्केल में आपको एक्स एक्सिस कौन से वाले लिया वो लिखना है और वाई एक्सिस पे कौन से वाले लिखना है वो भी लिखना है. ठीक है, तो अभी मैं एक्स एक्सिस 1 हो गया और वाई जैसे बताया आपको 1 सेंटीमीटर को हाफ यूनिट लेता हूँ. तो इसलिए अगर मैं ये ले लिया तो -1/2 1 -3/2. सेम वे आपको ऊपर भी लिखना है 1/2 1 3/2. शायद ये काफ़ी है, लेकिन चेक करते हैं. x0 -3/2 x0 -3/2 ये फर्स्ट पॉइंट, 3,0 सेकेंड पॉइंट, 3,0 ये होता है. तो अभी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये दोनों पॉइंट्स टच कर सकें. तो ऐसा आपको पहले लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ वो लाइन भी एक्सप्लेन करना है कि कौन सा लाइन है. ये फर्स्ट वाला लाइन मतलब 2x - 3y इज इक्वल टू 3 x - 2y इज इक्वल टू 3. तो ये हो गया फर्स्ट लाइन x - 2y इज इक्वल टू 3. सेम वे वी हैव टू प्लॉट फॉर सेकेंड लाइन. सो सेकेंड लाइन पॉइंट्स आर 1,1/2 5,1. 1,1/2 is here and 5,1 is here. So let's
draw these join lines as that it is touching these two lines. Okay, so this second equation, which is 3x minus 8y is equal to 7. 3x minus 8y is equal to 7. So these two lines, if you notice, it is intersecting at one point. आपको एक point में intersect हो रहा है और वो वाला point होगा 5, 1. Okay, hence solution is equal to 5, 1. आप एक पॉइंट चेक भी कर सकते हैं, जैसे दोनों x 5, 1 दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए. तो इधर में x वैल्यू x वैल्यू 5, 1 अगर मिल लिया, 5 minus 2 into 1 which is 3 is correct. सेम में इधर 3 into 5 15 minus 8 into 1 15 minus 8 is 7. hence the equation is correct because it is satisfying दोनों both the equations. तो हमको जो भी पॉइंट मिल गया तो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है. ठीक है, इस तरफ वो ग्राफिकल सोल्यूशन हो जाएंगे. तभी हम बी पार्ट पहले स्टार्ट कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द बी पार्ट. 5 years ago. सो ये एज वाले क्वेश्चन है. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस एज वाले क्वेश्चंस आपने चेक कर लिया तो उसमें आपको पहले बताऊं कि जब भी एज वाले क्वेश्चंस मिल गए हमको 3 सेक्शंस डिवाइड करना है. तो इसमें क्या क्या लिखना है कि फर्स्ट वॉल्यूम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. अगर आपने ऐसे टेबल बना दिया तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा. So always make sure to draw three that is past, present and future, and write the details, and then we can easily solve this type of questions. Okay, so first thing 5 years ago. so मतलब past -5 का है, present always 0 होता है और future या अदर पुश फ्यूचर के 10 years later लिखा है तो मतलब future plus 10. Okay, now let's solve this question. So हमको दो कैरेक्टर से एक अडिल और एक भरत. तो अडिल को मैं x लेता हूँ और भरत को y. सो इधर लिख लेता हूँ लेट. ओके, राइट इट नेक्स्ट पेज. लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ अडिल एंड भरत are x and y respectively. तो respectively का मतलब है कि corresponding, मतलब अडिल का x होगा और भरत का y होगा. ठीक है, अब लिख लेता हूँ अडिल और भरत. मतलब अडिल का एज पास्ट में x minus 5 होगा और भरत का y minus 5. प्रेजेंट में दोनों का x and y होता है और फ्यूचर में अडिल का 10 plus x plus 10 और भरत का y plus 10. ओके, नाउ हम चेक करेंगे रिलेशन क्या लिखा है. अडिल 5 years ago मतलब पास्ट में अडिल वाज थ्राइस एज ओल्ड एज भरत. सो पास्ट में अडिल का एज जो भी है वो भरत से 3 गुनिया है. ओके, प्रेजेंट में कुछ रिलेशन नहीं दिया है. 10 years later अडिल विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज भरत. सो इन फ्यूचर अडिल सेज दैट इज x plus 10 will be twice of y plus 10. होप यू अंडरस्टूड. बिकॉज अगर आपने ये वाला स्टेप कर लिया तो समझ लो कि हमारा क्वेश्चन 80% हो गया. ओके, सो मतलब ओके, लेट्स राइट दिस बोथ द इक्वेशंस. x minus 5 is equal to 3 into y minus 5. x minus 5 is equal to 3 into y minus 5. Same way we have the second equation. What is that? x plus 10 is equal to 2 into y plus 10. x plus 10 is equal to 2 into y plus 10. Let's solve it. x minus 5 is equal to 3y minus 15. So x minus 3y is equal to minus 15 plus 5 which is minus 10. This is equation 1. Same way let's solve equation 2. x plus 10 is equal to 2y plus 20. मतलब x minus 2y क्या होगा, 10 वो राइट से ले ले तो 20 minus 10 मिल जाएगा हमको 10. तो ये दूसरा इक्वेशन. ओके, तो ये दोनों सॉल्व करने के लिए मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करता हूँ. 1 minus 2 चेक कर लेता हूँ. 1 minus 2 होगा -3 plus 2y इज इक्वल टू -10. तो हमको मिल जाएंगे -y इज इक्वल टू -20. सो वी गॉट द y वैल्यू एज 20. मतलब भरत का करंट एज 20 हो गया. तो अभी मैं 20 किसी सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ.
20 में सेकंड इक्वेशन में सॉल्व कर लिया तो x माइनस 2y, x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, मतलब x वैल्यू होगा 10 प्लस 40, तो x वैल्यू मुझे मिल गया 50. Therefore Adil's current age is 50 years and Bharat's current age is 20 years. तो हमेशा ऐसा वाला क्वेश्चन हमको वैलिडेट भी करना है कि राइट आंसर्स की नहीं. तो पहले क्वेश्चन क्या बताया, 5 years बिफोर एक्स माइनस 5 3 टाइम्स ऑफ 5 माइनस 5. 5 years बिफोर मीन्स मतलब क्या होगा, अभी 45 होगा और 20 माइनस 5 मतलब 15, 3 इंटू 15, यस इट इज़ करेक्ट. सेम वे सेकेंड कंडीशन, x प्लस 10 शुड बी 2 इंटू वाई प्लस 10, मतलब x प्लस 10 60 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10, वाई मतलब 20, 20 प्लस 10 इज 30, यस दिस ऑल्सो करेक्ट. हेंस हमारे कैलकुलेशन सही चला. तो अभी इक्वेशंस में थोड़ा सा भी गलती होने के चांसेस ज़्यादा है. अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस किया तो 100% करेक्ट होगा. अगर फिर भी एग्जाम का प्रेजेंट में को थोड़ा सा रॉन्ग भी हो सकता है, इसलिए हमको ऐसे क्वेश्चंस को वैलिडेट करना है कि राइट कॉन्सेप्ट्स की नहीं. Okay, so always make sure to cross check or validate your answer whatever you're solving using equations, because even a minute correction during exam pressure can cause a loss of answers. Okay, now let's move to the next one. So ये statistics का question है, find the mean and mode of the following frequency distributions. हमको class दे दिया, frequency दे दिया और हमको mean और mode दोनों पूछ रहे हैं. शायद mean का weightage 2.5 है, अगर mode का भी weightage 2.5 हो सकता है, तो इस वाले का हमको पूरा 5 मार्क मिलना चाहिए. ठीक है, तो पहले मैं मीन कैलकुलेट कर लेता हूँ. तो इसी टेबल में यहाँ राइट साइड मेंशन कर लेता हूँ. मैं बड़ा वैल्यू है ना, तो इसलिए मैं x माइनस वो स्टेप डिविएशन फॉर्म में होता है ना, उस वाला मेथड यूज़ करता हूँ. ठीक है, तो इसलिए ये टेबल का नहीं, मैं दूसरा टेबल बनाता हूँ. क्लास फ्रीक्वेंसी xi minus a xi minus a by h, मान लो कि डी आई है, तो एफ आई डी आई, तो ये सारे वैल्यूज हमको कैलकुलेट करना है मीन कैलकुलेशन के लिए. ओके, तो क्लासेस लिख लेता हूँ, 0 to 15 और 15 to 15. ओके, 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90, last 90 to not. Nine 15 35 20, 9 15 35 20, 11 13 17, 11 13 17. तो पहले ये सारे कैलकुलेट कर लेते हैं. सिग्मा एफ मिल जाएंगे. 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 1 20, 20 प्लस 10 30, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 8 9 10 11 12. तो सिग्मा एफ मुझे मिल गया 120. सेम एज, तो अभी एक्स वैल्यू क्या होगा कि इस वैल्यू का हाफ होगा, मतलब 7.5 होगा. और इधर 15 टू मतलब 22.5 प्लस 15 37.5, 52.5, 67.5, 82.5 और लास्ट 97.5. ओके, तो मैं एज्यूम मिड वैल्यू लेता हूँ, मतलब ए वैल्यू
ये 52.5 का ये वैल्यू लेता हूँ तो 77.5 माइनस 52.5 मुझे मिल जाएंगे 45 होंगी, -45। तो अभी इसको -30 होगा, -15, 0, plus 15, 30 and 45. So I hope you understood how I am writing this question, because I have assumed the mean value as this one, which is 52.5, and then I am using xi minus a values to find this value. Okay, now then I will divide with h to get da value. So h value क्लास इंटरवल होता है और इधर आप चेक कर सकते हो 0 to 15 मतलब 15 होगा। तो 45 by 15 is -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3। ओके, तो अभी ये कैलकुलेशन आसान होगा। ओके, 9 3 27, 5 2 30, 35 1 35, 0, 11 1 11, 13 2 26 and 17 3 51। okay, let's find this value. So first I will write for all negative, it becomes 6 7 8 9 -92. Same as for positives, it will become 8 82 88 plus 88. So -92 plus 88, I will get the value as -4. Okay, so now this value is very small, so you can usually apply the formula to get the answer. So the formula is a plus sigma fi di by sigma fi into h. Substitute a value we are assuming as 52.5 plus sigma fi di, I got the -4, sigma fi is 120, h value is 15. 15 8 7 120, 4 1s 4 2s, so I'll get the final answer as 52. So mean value, I got the answer as 52. Okay, same way we have to get the answer for mode. This is bit lengthy when compared to previous questions, but there will be definite other questions as well where you have to do it faster. Okay, so for this the first point is lengthy, that is you have to draw the tables. Let's do it again. Class and frequency. Mode definitely will be less time consuming when compared to other one. Zero to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90, and the last one 90 to 105. Set the frequency values: 9 15, 35 20, 11 13 17. तो हमको मोड कैलकुलेशन करने के लिए हमको ये वैल्यू निकालना है कि जिसका वैल्यू हाईएस्ट है, मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो हमको मुझे मिल गया ये वाला पॉइंट, ये मुझे मॉडल क्लास। ओके, तो मॉडल क्लास में हमको पहले एल वैल्यू लिखना है, एल वैल्यू 30, F1 मतलब जो उसी लाइन का वैल्यू 35, F2 प्रीसीडिंग मतलब बिलो का लाइन 20, F1 which F0 which is succeeding that before line which is 15. So just use all these form values to get the value of mode. तो mode का फॉर्मूला क्या होता है? L plus F1 minus F0 by 2F1 minus F2 minus F1 into h. Substitute the values. L value is 30 plus F1 minus F0, 35 minus F1 minus F0, 35 minus 15 is 20 by 2F1 which is 70 minus F2 20, F1 35 into h value is 15. So this value I'll get it as 30 plus 20 into 15 is 300 by 70 minus 55, 70 minus 55 is 15. 15 is 30, so this value I'll get the answer as 50.
Okay, small correction. So it is formula is 2f2 minus f naught, not f1. Okay, so this becomes f naught is 15. So 70 minus 35, I'll get a value as 35. Okay, so 20 into 15, 5 3s, 5 sevens. So 20 into 3 is 60, so 30 plus 60 by 7. So 7 8 is 56, 40, 7 5 is 35, 50, 7 7 is 49. So this value is equal to 38.57. Okay, so just let's check step by step and confirm whether the calculation is correct. Okay, so seems everything is fine. So let's move to the next question. 34th one. So in this question also we have two things to solve, either A or B. So A part is the angle of elevation of the top of building from point A. So this is related to heights and distance. Same as definitely B also will be heights and distance question. Okay, let's see both the questions and understand which is easier and how to solve it. Okay, so हमको angle of elevation of the top of building from point T on the ground is 30. On moving a distance of 24 towards a space to the point B, the angle of elevation changes to 60. Find the height of the building and the distance point A from the base of the building. Okay, so this is easier because it's something like we have a tower and from point A he is seeing and again moving towards the tower and the angle changes. So this is straightforward question. What about B? A tower vertical stands on the ground B. A man standing at the top of the tower observes his friend at an angle of depression of 30, which who is approaching foot of tower in uniform speed. 30 seconds later, the angle of depression changes to 60. Find the time taken by his friend to reach the foot of tower from his point. So just a minute, I will come back. So let's continue. So based on these two questions, I will definitely choose A part.
Why? Because here there is no speed type of question. It's direct. They're saying that one person is moving and the angle is changing. We have to get the heights and distance. Same as here. The here also it is similar question, but here the speed type of concept is related, which we need to do extra calculation. Whereas here there is no need to do such type of calculations. तो अभी मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूँ. अगर मैं आपके स्थान में होता जरूर ए वाला क्वेश्चन चूज़ करता हूँ, क्योंकि इधर स्पीड का कैलकुलेशन उस वाला फार्मूलाज का कोई रिलेशन नहीं है. पर बी वाले क्वेश्चन में हमको स्पीड का कॉन्सेप्ट लिखा है, मतलब एक एक्स्ट्रा फार्मूला, मतलब छोटा सा फार्मूला फिर भी एक एक्स्ट्रा फार्मूला लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी मैं पहले ये का एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद विल मूव टू दिस बी पार्ट. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30. तो अभी मैं ड्रा कर लेता हूँ. तो फ्रॉम पॉइंट ए द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 30. ऑन मूविंग द डिस्टेंस ऑफ 24 टुवर्ड्स स्पेस. तो अभी हमको 24 अगर मैं डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया तो हम मुझे बी पॉइंट मिल जाएंगे. तो यहाँ से कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्रीज. तो अभी एंगल चेंज हो गया 60 डिग्रीज. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो हमको हाइट निकालना है एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए. ओके, ये पूरा डिस्टेंस भी लिखाना है. 2 पॉइंट्स हमको मेजर करना है. टेक √3. ओके, हमको √3 का वैल्यू भी दे गया, वो 1.73 है. ठीक है, तो पहले हम ये मैं पॉइंट्स मेजर कर लेता हूँ कि सी डी. लेट सी डी बी द बिल्डिंग okay. So if you consider triangle ACD, so if you consider a triangle ACD, tan 30 is opposite by adjacent, so opposite is h, adjacent is, okay, this value I will write it as x. Okay, so now this becomes x plus 24. Okay, so what is tan 30? Tan 30 is 1 by √3. So 1 by √3 is equal to h by x plus 24. Okay, so I can write this equation as x plus 24 is equal to h √3. Keep it as 1. Okay, so let's see the second triangle, which is BCD. If you consider triangle BCD, then tan 60, which is nothing but the height by opposite side. Again, opposite side is h, adjacent is x. So now this becomes h by x. So what is tan 60? Tan 60 value is √3. √3 is equal to h by x. So from here I can say the h value is x √3. Okay, now substitute this in first equation. Now I will get x plus 24 is equal to h is x √3 into √3. So √3 into √3 is 3. So this I can write it as x plus 24 is equal to 3x. So 24 is equal to 2x. So I'll get the x value as 12. But we don't want x value. They're asking the distance from A to the building. So which is 24 plus x. So distance from A to building is 24 plus x, which is 24 plus 12, which is 36. What about height of building? Height of building is h. H is nothing but x √3. X √3 or x by √3? X √3. Okay, so this is that x is how much? 12. 12 √3. So they have question in given in the question, you have to choose √3 as 1.73. Just multiply it. 2 3 is 6, 2 7 is 14, 1 2 1 is 2 3, and 173. So this becomes 6 7. So the answer is 20.76 meters is the height of the building.
Okay, two things. Distance from point A to B is 36 meters and height of the building is 20.76 meters. Okay, now let's move to the B part. A tower stands vertical on the ground. A man standing at the top of the tower observes his friend at an angle of 30 degrees. So here we have a tower, and here a person is standing, and he says that man standing on the top of the observes his friend at angle of depression 30 degrees who is approaching the foot of tower. So let us assume his friend, he is at position this one. Okay, so this position I'm marking it as A, this mark it as BC. So from this position angle of depression is 30. So let's mark a line, shaded line, and this angle is 30. So angle of depression concept, alternate angles, this angle also will be 30. Okay, approaching with uniform speed, 30 seconds later the angle of depression changes to 60. So now let's have another line. So now this becomes 60, and this position let's mark it as D. Okay, this angle is 60. So this is tower and this is tower height, so let's mark it as H. So here they haven't provided distance, but here they have mentioned time taken. Okay, so first of all, let's, for this type of question we need to write the first basic formula of speed is equal to distance by time. So distance traveled in 30 seconds. So time they have provided will be equal to speed, I am writing it as S, into time I will write it as 30. So 30 S. S is speed here. Okay, now we have this value as 30 S. And we don't know this value, and I will write this as X. Okay, so let's write in triangle, small triangle first of all, right, which is BCD. So tan 60 is equal to height by, we don't know that value, I'm writing it as X. So root 3 is equal to H by X. So H value is X root 3. Okay, what about the second triangle? If you can do the big one, which is ABC, then if I write tan 30 is equal to root of X plus the distance other one is 30s, where S is speed here. Okay, so tan 30 is 1 by root 3 is equal to H by X plus 30s. So if I write X plus 30s, here it becomes H root 3. So this I wrote as 1, substitute here, I will get X plus 30s is equal to 3x. So 30s is nothing but 3x minus 2x, which is 3x minus x is 2x. So I got the x value as 30 by 2, which is 15s. Where s is speed. But we don't want x as a distance, we want the time taken. So time taken to cover distance of 15s is speed, as I mentioned, it is distance by time. So speed is s, we already know. Distance, it is showing 15s by time. Second s gets cancelled out, you will get the time as 15 seconds. ओके, सो हम लास्ट क्वेश्चन पर मूव कर लेंगे, वो सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल्स का क्वेश्चन 35th वन. तो पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेंगे. इन ए ट्राइंगल ABC AD इज द मीडियन, X इज द पॉइंट ऑन AD सच दैट AD इज टू XT is 2:3, BX is extended so that it intercepts AC at Y. You have to prove BX is equal to 4XY. ओके, सो ये वाला क्वेश्चन मैं दूसरा ड्रॉ कर लेता हूँ.
ए बी सी डी और एक्स वाई। Okay, ax is to xt is 2 is to 3. They have given ax is to xd is 2 is to 3, 2 by 3. ओके, तो हमको पहला स्टेप क्या लिखना है कि हमको बीपीटी थ्योरम पता है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, उस वाला थ्योरम से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वी हैव टू यूज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेप हमको ओके एक्स्ट्रॉयल ड्रॉ a line dz such that it is parallel to xy। तो अभी मैं एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि वो एग्जैक्टली x एंड y का पैरेलल हो जाए। तो ये वाला पॉइंट dz। ओके, तो ax is to xt हमको बताएं। और अगर आप ये dz अप्लाई bpt in a dz, if I apply bpt, what will happen? You can not only apply bpt, you can also directly say let's use similar triangles, not bpt, triangles AXY is similar to triangle ADZ. Why? Because angle A is equal to angle A and angle X will be equal to angle D, and the other angle is also equal, angle Y is equal to angle Z. Why? Because the lines are parallel. Okay, so now if I write for similar triangles, what is the corresponding? The corresponding ratios are proportional. So AX by AD will be equal to xy by dz. Okay, so ax by xt we already know, which is 2 by 3 is equal to, not 2 by 3, yeah, 2 by 3 is equal to xy by dz. Okay, just a minute. xd is 3, but I want ad. Ad becomes ax plus xt. So if I write ax by ad, this becomes 2 by 2 plus 3, which is 2 by 5 here. Okay, so this becomes 2 by 5. Let me correct it. Okay, now from here I can write dz, the value is 5 by 2 xy. So हमको ये वाला पॉइंट बहुत नेक्स्ट स्टेप में मेंशन करना है। dz हमको मिल गया 5 by 2 xy। dz is equal to 5 by 2 xy. Let's keep it aside. Now consider triangle CBY. ट्रायंगल CBY, अगर आपने ट्रायंगल CBY लिख दिया, हमको दो ट्रायंगल सिमिलर मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ मैं कलर चेंज करता हूँ, पर आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। पर अभी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको ये वाला एक ट्रायंगल एक है और दूसरा ट्रायंगल ये एक है। अभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट, एंगल C is equal to angle C, angle D will be equal to angle this one, and the same way angle Y will be equal to angle Z because those are parallel. So I'll write triangle CBY and triangle CDZ are similar as angle C is equal to angle C common and angle B will be equal to angle D and angle Y is equal to angle Z as lines are parallel. ओके, अगर सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोस इक्वल होंगे। तो यहाँ मैं सीधा लिख देता हूँ। ओके, यहाँ हमको क्वेश्चन में ये मीडियन करके दिया है, मतलब ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा। ओके, तो सी डी बाई
BC, CD by BC is equal to DZ by BY, DZ by BY। CD by B से हमको मिल गया 1/2 क्योंकि वह मिड पॉइंट है। CD by BC, CD by BC, okay, it is midpoint, so that's why it is 1:2 is equal to DZ by BY। तो हमको BY मिल गया 2DZ। सो DZ क्या है 5/2 XY, सो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ 2 into 5/2 XY, तो 2 gets cancelled out, so I will get the BY value as 5XY। okay, but they don't want BY, what they want in the question? The question they are asking BX to be 4XY। तो यहाँ हम BY लिख सकते हैं, BY और BX is equal to BY minus XY। so BY how much we got? BY we got it as 5XY। तो 5XY माइनस XY हो जाएगा, मतलब टोटल फाइनल आंसर 4XY। तो इसलिए वो फाइनल कंक्लूजन BX is equal to 4XY। okay, so in this way all the questions of section D are solved। so if you have any questions regarding this 5 questions, if you want to have any other questions as well, kindly post in the community section, that I'll definitely check and answer to it। so as of now I'll just write the answer key for section B, answer key for section D। तभी मैं आंसर लिख देता हूँ 5 क्वेश्चंस अभी जो हमने सॉल्व कर लिए। सो ए पार्ट का ग्राफ है और बी पार्ट का हमको मिल गया एक एक लिख देता हूँ 32 का ए पार्ट हमको मिल गया ग्राफिकल क्वेश्चन, फिर भी पॉइंट हमको मिल गया 5,1। और बी का क्वेश्चन हमको मिल गया 50 और 20, अडिल का 50 भरत का 20। अडिल एज 50, भरत एज 20 years। ओके, जैसे हमने बाकी क्वेश्चन पे सॉल्व किया तो एक एक का आंसर लिख देता हूँ 33, मीन 52 और मोड 38.57। मीन 52 मोड 38.57। ओके, 34th क्वेश्चन, ये ए और बी हैं, ए 36 और 20.76। हाइट इज इक्वल टू, नॉट हाइट, डिस्टेंस 36 meters, height 20.76। और बी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बी का टाइम है और हमको मिल गया 15 सेकेंड्स। ओके, 35th का प्रूफ है तो इसलिए वो सॉल्यूशन मैं यहाँ निकले रहा हूँ, तो सीधा मैं प्रूफ लिख देता हूँ। और अगर कुछ डाउट्स है तो इस वाले क्वेश्चन में आपको कोई जैसे आपको लगे कि क्वेश्चन रॉन्ग मतलब आंसर रॉन्ग कुछ करेक्शन करना है तो उस वाले क्वेश्चन भी मैं कमेंट भी मैं आप
एक्सेप्ट करता हूँ, और जो भी डाउट्स है वो आप सीधा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लीजिए. Well, whichever you have doubts regarding this video, you can kindly mention in the comment section. If you have any other question related to this, something like if you say that you are getting some other answer, then you can also, I will be really happy if you have such type of questions, because I will definitely check and respond to you accordingly. Okay. And one more thing, if you have any other questions with respect, if you want to get the solution for the other set, kindly mention that question in the community or the post section of the YouTube channel, because that I have provided, that I have enabled for all the subscribers. Okay. So thanks for watching. We'll meet mostly on Monday with section C questions. Sorry, last section, which is section E, on Monday. Okay, so if you have any doubts regarding this video, kindly mention in the comment section. And if you like this video and if you found that video is helpful, please comment like yes, understood. That will be sufficient in the comment section, because that will be really boost me that you guys are able to understand my point of view of questions. Okay, so thanks for watching once again, and let's meet again on Monday with section E solutions. Thank you.